Okay, starting with MCQ 92, drug of choice for cardiogenic shock is, तो it is dopamine and dobutamine. ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक में हम क्या देते हैं, डोपामीन देते हैं और डोब्यूटामीन देते हैं, जबकि एनाफाइलेक्टिक शॉक में एड्रीनलीन, ठीक है, सेप्टिक शॉक के अंदर नोर एड्रीनलीन, कार्डिक अरेस्ट में एड्रीनलीन, ब्रेडिकार्डिया में एट्रोपिन। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ड्यूरिंग अपेंडेक्टमी with incision at McBurney's point, structure likely to be injured is iliohypogastric nerve. Clear? जब आपसे स्ट्रक्चर का पूछेंगे यू हैव टू मेंशन नर्व. क्लियर? हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस डिफेक्टिव प्रोटीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इट इज स्पेक्टेरिन. क्लियर? हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में क्या होता है, स्पेक्टेरिन प्रोटीन का क्या होता है, डिफेक्ट होता है. जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडीज इज, इट इज़ बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडीज, तो इट इज़ symphysial type of joints. A patient presented with road traffic accident, you are advised to take histology slide containing muscle fasciculus surrounded by connective tissue and the layer it is termed as perimysium. Clear? अब पेरीमेजियम में क्या था हमारे पास, इट इंक्लोजेस द बंडल ऑफ मसल्स, यानी कि पूरा का पूरा मसल फाइबर फेसिकुलाई, तो इट इज़ पेरीमाइजियम. क्लियर? अगला है ऑटो इम्यून डिजीज़ ओनली रिलेटेड टू वन ऑर्गन इज हाशिमोटोस थायरॉयडाइटिस विच इंक्लूड्स थायरॉयड ओनली. टर्मिनल एलियम resection which vitamin deficiency will occur, तो it is vitamin B12 deficiency. Deep injury in the radial groove, what movement will be affected, तो it is loss of wrist resulting in wrist drop. Total body water is measured by titrated water. ठीक है, अब इसमें देखिएगा टोटल बॉडी वाटर को हम टाइट्रेटेड वाटर में मेयर करते हैं. ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम मेयर करते हैं मैनिटोल, इन्यूलिन और सल्फेट से. प्लाज्मा को हम कैसे मेयर करते हैं, इवेंट्स ब्लू एंड राइसा से. इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड प्लाज्मा से. ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड माइनस प्लाज्मा, तो वो हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो जाता है. जबकि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए क्या करते हैं, टोटल बॉडी वाटर माइनस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. क्लियर? तो ये याद करना है. अब प्योरीफाइड प्रोटीन प्योरीफाइड डेरिवेटिव ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट इज़ डन टू अ पेशेंट आफ्टर 40 आवर्स. 15 mm एरिथमा इज़ नोटेड विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो ये टीबी है. ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, हेल्पर टी सेल्स. एन अडल्ट इज सिटिंग पोजिशन, रेजोनेंस कैन बी ऑस्कल्टेटेड फ्रॉम द बैक ऑफ द चेस्ट टिल, कौन से रिब तक हम कर सकते हैं, टिल 10th रिब. क्लियर? अब देखो मिड क्लेविकुलर लाइन तक जाते हो, ठीक है, 6th रिब तक. क्लियर? मिड एक्सिलरी लाइन से आप जाते हो तो 8th रिब को भी अप्रोच करते हो, और बैक से जाते हो जो कि इस सिनेरियो में तो इट इज़ 10th रिब. क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सार्कोमा, तो इट इज़ इंक्रीज्ड वेस्कुलैरिटी. 10 years old girl presented playing outside, felt pain due to cold weather, having increased heart rate, increased blood pressure and increased shivering will cause, तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इरेक्टर पिलाई मसल्स. ग्लूकागोन इज स्टिमुलेटेड बाय एक्सरसाइज. ठीक है, a patient is passing diluted urine, ठीक है, asthenuria, there is tubuloglomerular concentrating problem. What other factors you see in this condition, तो it is low urinary sodium. Clear? अब clearly problem is in concentration of the urine, so salt, that is the sodium, will be low in urine. Clear? 20 years old male with dyspnea or lying down, the anatomical structure likely to cause this dyspnea is retrogoiter. ठीक है, retrosternal goiter है. Cremasteric reflex is it is a polysynaptic reflex. A 15 years old boy complained of loss of appetite, vomiting and high colored urine. On examination, yellow discoloration of the sclera. Investigation of choice is bilirubin and ALT estimation. A patient known case of mitral stenosis is having irregular pulse. Most common finding on the JVP is absent A wave. Clear? तो it is absent A wave. Absent A wave किस में होता है, atrial fibrillation. Systolic phase of cardiac cycle corresponds to which of the following component of ECG, तो systolic phase हमें कहाँ मिलता है, QT over और QT or RT interval. Patient after thyroidectomy now develops hoarseness of voice.
Examination reveals tense voice cords. Which of the following is most likely to be damaged? So it is vocalis muscle. Clear? Major plasma buffers are bicarbonate. ठीक है, मेजर प्लाज्मा बफर इज बाइकार्बोनेट, इसको याद कर लेना है. अच्छा, the next is a diabetic patient with gastroparesis, indigestion indigestion and heartburn. The treatment is prokinetic drugs. Virulence of Staph aureus 10 is measured by coagulase positivity. Early stage of asthmatic attack, pulse rate, respiratory rate is 30 per minute. Will show it shows what? Low arterial partial pressure of carbon dioxide. Clear? Which of the following lesion is caused by chlamydia trachomatis? So it is lymphogranuloma venereum. Clear? अच्छा, main feature of malignancy is invasion. Clear? Tracheostomy in adult is at the level of C6. ठीक है, adults के अंदर tracheostomy किस level पे करते हैं? C6 पे. Travelers diarrhea, drug of choice is norfloxacin. Clear? Person traveling by air having nausea, vomiting, treatment will be by cyclizine. Clear? The drug in morning sickness is pyridoxine. Drug in motion sickness is scopolamine, followed by maclizine. Drug in mountain sickness is acetylzolamide. Drug in air sickness is mecolzine. Clear? ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा. 45 years old female present with bone marrow and paresthesia in the lower limbs. Her laboratory investigations were done and it shows serum calcium levels of 2.6. ठीक है, उसके बाद है कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज़ 0.9, ALP इज़ 385. ठीक है, अगला हमारे पास है जी पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल्स वर बॉर्डर लाइन. ठीक है, तो व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोसिस? इट इज़ प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. क्लियर? अब देखो, अर्ली प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? कैल्शियम एंड पैराथायरॉयड हार्मोन्स इन द अपर नॉर्मल रेंज एंड फॉस्फेट इन द लोअर नॉर्मल रेंज. क्लियर? Lady who had colostomy was started on total parenteral nutrition. Total parenteral nutrition included which problem will be seen? So it is hyperglycemia. Clear? In construction factory worker there is risk of asbestosis. ठीक है, 60 years old man with a previous history of right carotid and arterectomy comes to his physician complaining of lightheadedness and dizziness whenever he uses right hand rigorously. ठीक है, vigorously. He was diagnosed as having subclavian artery steal syndrome due to atherosclerotic plaque at this point where the subclavian artery branches from the brachiocephalic trunk. The cerebral insufficiency is the result of blood being stolen from which artery? तो ये आपने याद रखना है, vertebral artery. सबक्लेवियन स्टील आर्टरी सिंड्रोम का क्या है? वर्टिब्रल आर्टरी इज इन्वॉल्व. A person presented to you with history of severe headache and vomiting at the start of the day. There was a tumor suspicion on radiography, which was in the cerebellar region involving the granular layer. So it can be medulloblastoma. Clear? A lady heard his husband saying that the neighbor loves her but do not confess, which further proves his secret love. The lady tried contacting the neighbor but he refused, which makes her further sad. She is preoccupied with this thought and sometimes she get confused. It means she's indulged in delusional thoughts. A patient presented with prolonged diarrhea and undergoes esophagogastroduodenoscopy. Biopsy of the small intestine. Now she demonstrate protozoa, crescent shaped epithelia, protozoa. ठीक है, crescent shaped protozoa, adjacent epithelia, brush border. Organism most likely in this case is Giardia lamblia. जब भी crescent shaped protozoa आएगा, it is Giardiasis. ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई, तो ये हमारे पास क्या है? इट सप्लाइज एल्वियोलाई. क्लियर? अगला है, आ पेशेंट हैज़ लॉस्ट फाइन टच, वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन. वेयर इज़ द लीजन? तो इट इज़ डोर्सल कॉलम मीडिएटेड medial lemniscus. A patient had cough and on X-ray shows hilar lymph adenopathy, non-caseating granulomas, so it is sarcoidosis.
Alcoholic mother with a baby with a facial hypoplasia. Where does the defect lie? Embryonically. तो इसमें क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट आर्च डिफेक्ट होगा, जिसकी वजह से फेस के बोन सही से नहीं बनेंगे और फेशियल हाइपोप्लेजिया हो जाएगा, ठीक है। A patient using steroid for very long time, he is at the risk of development of osteoporosis and fracture. Right atrium infarction involves which of the following? So it is pectinate muscle. A patient presented with paralysis of the right limb and right lower face along with homonymous hemianopia. Lesion is present at which of the following? So it is forebrain. Cysticercosis is caused by which of these? So it is due to ingestion of ova of the tinea solium, ठीक है। Decrease in which neurotransmitter causes anxiety? तो it is GABA. Tumor suppressor gene is p53 gene. Most common inherited thrombotic disorder is due to factor 5 Leiden. Clear? A patient has presented with history of unconsciousness, fits, high-grade fever, and dark-colored urine. CSF is unremarkable, so it is cerebral malaria. A cardiac surgeon performing open heart surgery, what structure should be in care of the anterior mediastinum? तो ये हमारे पास क्या है, thymus. A patient is suffering from dysphagia, dysarthria, ठीक है, analgesia and thermo anesthesia on ipsilateral side of the face and ipsilateral Horner syndrome. Occlusion of which artery produces these signs and symptoms? तो it is pica, ठीक है। लेफ्ट बोन्स कनेक्शन विथ, ठीक है, लेफ्ट बोन की किसके साथ? राइट सेरिबेलम एंड लेफ्ट सेरिब्रम. Which of the following decreases arterial oxygen saturation without decreasing arterial oxygen tension? तो carbon monoxide poisoning. 25 years old man presented with the complaint of postprandial bloating and abdominal cramping. He has history of passing foul smelling stool. Which investigation will give us multiple information regarding this problem? तो it is stool DR, ठीक है। After dehydration, nephron part most affected is proximal convoluted tubule. A patient with acute appendicitis, pain and fever for last 24 hours on pathological examination, तो इसके अंदर क्या होगा? Neutrophils in the muscular wall. After vasectomy, seminal fluid will contain, तो it will contain seminal and prostatic fluid, ठीक है। अगला है 30 years old male who has treated for meningitis 1 month back. Now he complains of morning headache. On examination, there is bilateral papillary edema. What is the cause? So it is hydrocephalus. Clear? Resting membrane potential is caused by, तो it is potassium efflux, ठीक है। पोटेशियम के efflux की वजह से क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल